So hey guys, welcome to this brand new testimonial video. Today I have a man with me who leads by example. So he's a working professional, doting husband, loving father, a marathon runner in the highest motorable pass in the country, and a strength coach himself. So I'm at a loss of words, but I would like to welcome to this panel today Mr. Prashant Gupta, who's from Mumbai, and he's going to be sharing his experience with our 90-day ISP body recomposition program. So let us get started. Hi, Prashant. How are you doing today? Hello, sir. I'm fine. Thank you so much for this call. I'm very excited to share my experience with the newbies who would be watching this Hmm. video. So, something about myself is that I am a working professional. I've been working with a private corporate for last around 22 years now, and my passion for fitness has been quite long, but due to couple of injuries in between, there have been some stepping stones during the process. And because of my recent injury in the past 10 months or so, I was kind of very demotivated and for gaining weight because I was totally out of my fitness regime and I was not able to do my workouts and neither my runs because I'm a very passionate runner, swimmer, and a cyclist. So last after I did my Ironman in October, I faced this issue in my right knee and I was totally thrown out of uh, running, swimming, or any activity. So I started off gaining weight, and then through uh, through the social media, I gotten connect with you, and then that was the time when things changed, and it was really very awesome that after a couple of calls with you and the way you questioned me and the way you understood my problem, it was really very motivating, and I just never gave it a second thought of not connecting or joining with you, and it has really come out well because you always dream of a very nice six pack body and Hmm. get those results in such a quick time. Obviously, you need to be very dedicated, but still, it's a dream come true. Many people think of having, but they couldn't do that. So in my case, it really happened, and yes, I got what I wanted in just 90 days of program. Amazing, So amazing. Thank you so much for such a lovely introduction to yourself and such a lovely introduction to how we got started. So, guys, um, I think Prashant messaged us through our Instagram ad itself, and then we had a call together. And I remember the one of the first things that I asked him, I was like, he told me that he's a strength coach himself. He loves running, and I asked him, why is a strength coach in a condition like this, wherein you need to come on a call with me? So then I understood about what his injuries were and how much he wanted to do a certain thing and achieve a certain result in regards to fitness, but was lagging, certain aspects of knowledge in understanding the fact that, where was it that he was going wrong, because his injuries had given him major setbacks. And then we got talking, and I think from the get go, like Prashant said, it was amazing. It was lovely. There was no, negative back and forth. We knew that it was an instant connect, and I had promised Prashant that it is going to happen. And my God, the dedication this man has shown, and today it has finally happened. That a father, a strength coach, a working professional. He's literally a Rajnikant, all in one. And now also a dad with a hot bod and a six pack. So we'll probably, display his before and after pictures here, so you can see what his hard work has amounted to. And then we'll also have a chat further and understand more about himself. So प्रशांत चलो अब थोड़ा फॉर्मेलिटी से हटते हैं और हिंदी में बात करते हैं. तो आप मुझे अब ये बताओ कि जब हमने वर्क करना शुरू किया, राइट, साथ में, तो थोड़ा स्केप्टिसिज्म था, होगा नहीं होगा. यू मेट अ कोच ऑनलाइन, राइट? यू इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ मनी, यू इन्वेस्टेड योर टाइम. So there is, it can go both ways from here. So what were the changes that you saw
इन योर सेल्फ, जिससे आपको ये यकीन हुआ कि दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू? Initially, the plan, a very detailed and very systematic plan came up on my email, and I just thought to say it is something very, uh, what I can say is it was absolutely very different to Hmm. what others may be doing. I am not sure because I've never interacted with anyone else except you. But I just thought that everything is very, very planned in every way. Matlab, there were nutrition guidance, there were uh, workout guidance with proper links to each and every workout videos. There was a supplement guide. There were 4 or 5 guides which were given on email, and everything was very systematically, mentioned, like एकदम बच्चों की तरह सिखाते हैं ना, जैसे introduction, what to do, what next to do, now you have to do this, now you do that. मतलब बहुत ही सिंपल एंड सेटल वे में दिया था, एंड देन उसके हिसाब से ही फॉलो करना फ्रॉम डे वन स्टार्ट किया. बट ऑब्वियसली जैसा होता है ना कि एकदम से ट्रस्ट तो बिल्डअप नहीं होता है. बट Hmm. ये था कि अगर रिजल्ट अचीव करना है तो ये तो मालूम था कि इतना तो करना पड़ेगा, Hmm. क्योंकि मैंने वेट लॉस पहले भी किया है, तो चीजें मैंने पहले भी की हैं, तो इतना तो मालूम है कि बढ़ाना इज वेरी इजी, घटाना इज वेरी डिफिकल्ट. बट अगर करना है तो unless and until you trust the process, you trust the person, nothing can go right for you. तो Hmm. किया था, बट बीच में एक पॉइंट पे आके ऑब्वियसली वेट थोड़ा अटका. इट वाज नॉट मूविंग. आई जस्ट थॉट कि एवरी टाइम इट हैपेंस लाइक दिस. बट फिर द बेस्ट पार्ट इज अवर, इतना हैंड होल्डिंग है कि एवरी वीक जो अपडेट रहता है, डेली अपडेट रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थिंग्स गेट वेरी क्लियर, वेर यू गोइंग रॉन्ग. मतलब ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद बोला कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, वैसा तो होता नहीं है. एवरी वीक पूरा ऑडिट हो जाता है, हिसाब किताब पूरा हो जाता है कि तुमने क्या गलत किया, क्या नहीं किया, बिकॉज एवरी डे वी हैव बीन सेंडिंग डेली अकाउंटेबिलिटी, वीकली अकाउंटेबिलिटी. अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इट विल शो अप ऑन द रिजल्ट्स. तो हमारा बात हुआ, एंड इतना अच्छा लगा कि मतलब उसमें कि चलो फिर से देखते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ गलत कर रहे हैं ना. तो द बेस्ट पार्ट इज की वॉट एवर यू ईट, वॉट एवर यू डू, यू जस्ट शेयर पिक्चर्स. अपने आप पे ट्रस्ट रख के जो भी खा रहे हो भेज दो, लड्डू खा रहे हो तो भेज ही दो. तो क्या होगा कि अच्छा। क्या है कि एटलीस्ट आप, नहीं, आप जो भी खा रहे हो भले ही चोरी करके खा रहे हो, लेकिन आप बता दोगे तो क्या है कि आपका मन रहेगा कि हाँ भाई मैंने खाया था. ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मतलब बगैर खाए तो वजन नहीं बढ़ सकता ना. तो वो एकदम कट टू कट टू द टी फॉलो किया, तो फिर वेट जब नीचे आ जाता है तो फिर और मोटिवेशन मिलता है. एंड देन उसके बाद वो एक ऑब्स्टिकल क्रॉस हुआ, तो देन स्टेडी स्टेडली वेट डाउन होना शुरू हो गया. एंड देन ऑब्वियसली वर्कआउट सर सब करते करते रीच वेयर आई एम. दूसरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैंने, तो क्या होता है कि पहले भी मैंने किया हुआ है, आई बीन टू दिस लेवल. बट कैसा होता है कि उस समय जब हमने किया था तब ऐसा लगता है कि मतलब जब लोग आपकी चबी बॉडी देखते हैं, फ्लफी बॉडी देखते हैं, देन यू सी सच रिड्यूस्ड इन वेट, तो बोलते हैं कि मतलब आई यू इल, बीमार हो गया, कुछ हो गया क्या, Hmm. वेट लॉस करना और करेक्ट वेट लॉस करने में देर इज ह्यूज डिफरेंस. Hmm. कई बार वेट लॉस मसल लॉस करके भी हम कर सकते हैं, वेर यू विल लुक लीन बट यू लुक वीक. Hmm. बट टू लुक लीन एंड टू लुक स्ट्रॉन्ग इज समथिंग वन मस्ट टारगेट. तो विद द राइट न्यूट्रिशनल गाइडेंस, और मतलब ऐसा, तो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और कोई ये नहीं बोलता कि आप कमजोर दिख रहे हो. Hmm. कोई चेहरे से आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे क्या हो गया, बीमार हो गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है. तो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ डूइंग द थिंग्स द राइट वे दे शुड बी डन. तो न्यूट्रिशन गाइडेंस जो मिलती है, एंड देन जो वे में आपका जो न्यूट्रिशन प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो, तो डेफिनेटली यू विल नॉट लुक वीक, यू विल लुक स्ट्रॉन्गर, एंड पेट हमेशा भरा रहता है. तो मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हम
डाइट कर रहे हैं. इट इज नॉट डाइट, इट इज बेसिकली माइंडफुल ईटिंग. व्हाट वी आर ईटिंग, ऐसा कम खा के वजन घटाना तो बहुत इजी बात है. अब एक महीना उपवास रख लो, वजन कम हो जाएगा. लेकिन 31वें दिन जब बढ़ने लगेगा तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. तो इट हैज टू बी डन इन राइट वे, अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडेंस. तो वो गाइडेंस हमेशा हमको उससे मिला है. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि ऑब्वियसली देयर इज अ हैंड होल्डिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. थैंक यू सो मच प्रशांत। तो दो तीन चीजें, पहली चीज मैं चाहता हूँ आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो ये वाली, कमेंट में प्रशांत की एज गेस करो। एंड आई एम वेरी श्योर आप पक्का गलत गेस करने वाले हो, ठीक है? प्रशांत एंड में बताएंगे आपकी एज, ठीक है? सो पूरा इंटरव्यू देखो एंड तक, ठीक है? बिकॉज व्हाट ही इज डन, ही इज आवर बेंजामिन बटन, ही इज लिटरली एज्ड बैकवर्ड्स। अगर आप इनकी पहली फोटोज देखोगे, it's like from uncle to daddy. That is what, I would target it like when I posted on Instagram, or I probably have posted on Instagram by now. दूसरी चीज है जो हैंड होल्डिंग की कह रहे हैं ना, इसमें आई थिंक एक बहुत अच्छा पार्ट हमारी वीकली कॉल्स ने भी प्ले किया, वेर इन देयर वाज अ फुल फ्लेजेड कम्युनिटी जिसमें प्रशांत वाज देयर, आर अदर सुपरस्टार्स वर देयर, एंड दीज पीपल आर सो पॉजिटिव, दे आर जस्ट मोटिवेटिंग ईच अदर, दे आर गिविंग ईच अदर अ पैट ऑन द बैक। एंड अगर कोई पीछे भी रहता है ना, तो हमारे बीच में हेल्दी कंपटीशन सबके चलते रहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी ऑल बिकेम अ फैमिली। एंड आई थिंक ये चीज मुझे प्रशांत के साथ फील हुई है कि फिटनेस तो ठीक है, आई डन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, बट फिटनेस के साथ साथ फैमिली भी मिली है। आप अग्री करोगे इस चीज से प्रशांत? Yeah, absolutely. It's like everyone together is there, like a family who is, not only. Can you hear me, sir? यस यस, आप दोबारा बोलो, कोई बात नहीं, मुझे पता है फोन आ गया था ना, Yeah. कोई बात नहीं, काट देंगे। So we all are like a family, and फैमिली में ऐसा नहीं कि कोई किसी को नीचे पुल डाउन कर रहा है. एवरीवन इज ट्राइंग टू पुश एवरीवन अप टू रीच देयर टारगेट्स. कोई नहीं कर पा रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, देन वी स्टार्ट अ हेल्दी कंपटीशन अमंग देम, अमंग आवरसेल्व्स. और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं थ्रू देयर स्टोरीज ऑफ हाउ दे हैव कम फ्रॉम वेयर they were, and challenging themselves, challenging the society, and then coming up to देख के इतना मोटिवेशन आता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. Why राइट। everyone can't be fit in this world? If you have such a beautiful companion with you, and then who is always there for you, कभी भी कॉल करो, बात करो, everywhere, every time, he is there to support you. So जब इतना सा सपोर्ट मिलेगा and then you start seeing the results, तो obviously अच्छा तो लगता ही है. ग्रेट। तो सो द गुड पार्ट इज दैट जो प्रशांत जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, दीज आर रियल पीपल। ये नहीं है कि आपने इंटरनेट पे किसी को देखा एंड यूर लाइक हाँ सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सो इट्स ऑल आर सुपरस्टार्स, एंड दे आर ऑल परस्यूइंग ग्रेटनेस इन देयर ओन फिटनेस जर्नीज। एंड इट बिकम्स सो वेरी ब्यूटिफुल फॉर मी ऑल्सो एज अ कोच, कि मुझे ये लोग और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रशांत, हम लोग अपने सब स्टेप काउंट्स डालते हैं ग्रुप में, एंड प्रशांत इज लाइक डूइंग 15,000, आई एम लाइक अरे यार, these guys are doing so well, as a coach even I should push myself. So the idea is this beautiful environment got created, which is what makes me feel like we are all a family together, and उसी family का एक integral part प्रशांत भी है। So प्रशांत फिर बताओ कि आप तो वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन लोगों की तो बॉडी बनती नहीं, उनके तो एब्स होते नहीं, तो आपने क्या किया? उबला हुआ खाना खाया क्या बॉडी बनाने के लिए, या फिर बहुत वर्कआउट किया क्या, 3-3 घंटे जिम में गए वर्कआउट करने? कैसे बनाई ऐसा बॉडी? लगता था ऐसा हाँ। लगता था मेरे को कि वेजिटेरियन खा के नहीं होता है ये सब. हम्म। बट obviously आप you had given me so many choices in the veg food for हम्म। my app nutrition, कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ कम खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं, या वो हमसे बेटर खाता है, या हमारा हम्म। बॉडी उनसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जो लोग नॉन वेज खाते हैं. तो गाइज, वेज खा के भी यू कैन बी लाइक एन एलिफेंट. तो डोंट वरी, स्ट्रेंथ तो आ जाएगा एलिफेंट जैसे. बिल्कुल, वी लिव इन द डे एंड एज ऑफ 2024 बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस। तो यार सब चीजें हैं, वीगन बॉडी बिल्डर्स भी हैं आजकल। सो ये सब चीजें जो हैं, ये मिथ्स को ही हमें डीबस्ट करना है, बिकॉज फिटनेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड।
people make it complicated. And I hope you guys who are watching this, they are getting some value and understanding कि यार fitness में अगर you have the right environment, the right mindset and the right accountability partner, you can achieve anything, just like Prashant has achieved. तो प्रशांत फिर वर्कआउट की थोड़ी बात बताओ. अब उबला हुआ तो नहीं खाया, खाना भी अच्छा खाया, पेट भी भर गया. खाना भी अच्छा खाया है और वर्कआउट initially it was very simple workouts, just pulling out 30 minutes to 40 minutes of your day, doing home workouts through TheraBand, and then slowly and steadily trying to increase the activity. And then in the end stages where I was reaching my peak, मैंने जिम में भी स्टार्ट किया एंड जिम में मैंने काफी अच्छा वर्कआउट किया around with high intensity approximately 60 minutes, and I am a swimmer also, so my injury never came into between swimming and me. So swimming, doctors also advised me that you can swim definitely, obviously only a freestyle. So gym plus swimming plus normal step counts, not very brisk walking, these all things I did, and the results were achieved. See, workout basically uh, is only 20-30% of your fitness activity. The basic, the, and the biggest is how you eat, what you eat, and how much you eat, and in what quantity, and correctness in terms of nutrition. कि भाई चार कैटेगरी होती हैं उसकी: प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर एंड फैट. So it has to be really well balanced so that you don't get weak, and your daily nutrition should be met in each and every parameter. Yes, and if it छोड़ दो, butter छोड़ दो, सब कुछ. It has to be very balanced diet, and really it was very balanced, and I'm really happy the way the last 90 days have gone, and I'm sure the same thing I'll continue in the years to come. ऑसम ऑसम. तो मतलब आप जैसे बोल रहे हो, सिंपल था या फिर डिफिकल्ट था? कहीं सुनने वाले सोचे यार इतनी चीजें बोल रहे हैं प्रशांत, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट. तो उसके बारे में कुछ बताओ. वाज इट सिंपल या फिर वाज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न? ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इट्स वेरी सिंपल. जैसा डेली खाते हैं वैसा ही है. ओनली थिंग इज बस थोड़ा सा सोच समझ के खाना है. जैसा समझाया जाए वैसे जैसे बस कर लो, ज्यादा कुछ सोचो मत उस पर. ऑब्वियसली जंक फूड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जंक फूड के भी ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे कि आपको कैसे खाना है. हाउ यू हैव टू ईट ऑन ट्रैवल डेज पे भी आपको गाइडेंस मिलता है कि हाउ यू हैव टू ईट, व्हाट यू नॉट टू ईट. वीक डेज में तब यू कैन ईट योर चॉइस फूड. सारे ऑप्शंस रहते हैं. सो आई एम वेरी मच हैप्पी कि कुछ भी चीज जैसे छोड़नी नहीं पड़ती है कि नहीं सब छोड़ दिया, एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया, वैसा नहीं है. Great, awesome. So, guys, I want to tell you this, that Prashant has literally summed everything up. It's been a beautiful journey that I've had with him. In fact, at the time of we are recording this, Prashant made a promise to himself and to me that, he will make sure that he's going into surgery, by the way. So, you guys can give your prayers and your blessings in comments. And by the time maybe this gets published, he will be out of it and he'll be back at it in full swing. तो प्रशांत ने मुझे ये प्रॉमिस किया था दैट कोच वी विल डू दिस टुगेदर एंड हम अपना बीएमआई नॉर्मल करेंगे एंड आई विल गो इनटू सर्जरी एज अ फिट पर्सन. एंड आई रिमेंबर अ स्ट्रेंथ कोच हु वाज लाइक 10-12 kgs heavy. He not only lost those 12 kgs with us, right? Now also got a visible pair of abs, जो कि मैंने कहा था कि that will be my gift to you. So we did the peak week together. And now Prashant is going with his epitome of health in the surgery. And उसके बाद भी once he comes back, he has a lot of good future plans. तो प्रशांत आपके future plans की बात करें, क्या क्या करना चाहते हो एज अ स्ट्रेंथ कोच और आगे फिटनेस या में क्या करें? So yes, I do strength training. Around 10, 15 trainees are there with me who are doing training for the marathon running and all. Apart from that, my personal goals, I wanted to do comrades and Ironman, full Ironman in Dubai and South Africa. And the South Africa marathon is the ultimate human challenge. This is where you have to cover around 89 kilometers uphill from Durban to St. Peter, Mariburg. So that is a race which I had registered this year also, but unfortunately, I couldn't attend that. So that's my future goal in 2027. Now I target to do that.
because abhi this injury and recovery would take around 1.5 years. After that, but again I'll start training, and I'm sure I'll do that. So that's the, I think, 100th year for that race. So I'm Wow. targeting that year. Oh, wow. ये नहीं पता था मुझे. It's actually the 100th year. So then it's a diamond Yeah, jubilee of the whole race. Crazy. yeah. सेंटेनरी ईयर है, तो अब सोचा है कि उसी में भागेंगे जाके। अरे यार, ये तो आपने मुझे भी एनवीएस कर दिया. ले चलना मुझको भी साथ में 2027 में. ठीक है. That's great. No, so इससे पहले भी अगर guys you don't know, Prashant has completed marathons in Ladakh जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता. So this is some really good high level stuff that we are Yeah, so talking that about. one which I did was Khardungla Challenge. Hmm. It is a 72-kilometer race. It starts from Khardung village at around 14,000 feet. It goes up to 18,000 feet and then drops down to 12,000 feet and finishes in Leh. Hmm. So it's a good elevated stuff where obviously at Khardungla Pass, the air is very verified. So you have to be pretty cautious of how you do and how good you are doing the layering, because in the whole race, the race starts at 3 a.m. in the morning and finishes at 5 p.m. in the evening. So you will see a very, very huge range of the temperatures. Hmm. Sometimes it starts at minus degrees Hmm. and it finishes in Leh market at 35-degree plus. So Yeah. there's a huge range of temperature that you will come across throughout those 12 hours, 14 hours of your race. So it's a challenging race, obviously. And then after that, I am a very passionate triathlete also. So recently in Goa, last year I finished the triathlon where we swim 2 kilometers in the sea, and then you do 90 kilometer cycling on the elevated route, and Hmm. after that you will do 21 kilometers of running. So the running comes at the time it's around 12:30 p.m. We have to do 21 kilometers. So Goa being on the coast, the humidity was around 90%, temperature was around 38 degrees. So again, it's definitely challenging, but I finished in 7 hours out of the 8.5 hours allotted. So again, it was a great event for me, which I conquered. It was again one of my dreams to do Ironman. So yeah, I was able to do that. Good time. Awesome. That is great, Prashant. That is great. So, guys, I completed the whole Ladakh circuit, but on the bike. This man ran in that circuit. So that shows you the resilience of this person. And by the way, अभी तक हमने इनकी एज नहीं डिस्क्लोज करी. So वो हम अभी एंड में करेंगे. तो stay till the very end. So you've seen the great future plans he has. And आगे चल के भी once he comes out of surgery, हमने ये decide किया कि हम लोग बात करेंगे. And I'll see if at ASF, we can help him get equipped, get strengthened further to make sure that when he goes there in 2027, he's a completely different person and he brings back not only a good personal memory, but also a victory, which makes all of us ASF superstars proud. So, final question to you, Prashant. अब बहुत लोग हैं जो आपको इस वीडियो में देख रहे हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं उनको पता नहीं है भाई कि फिटनेस करनी तो है बट कर नहीं पा रहे हैं राइट दे आर बिजी प्रोफेशनल्स लाइक यू दे वांट टू गेट स्टार्टेड बट देन समथिंग इज होल्डिंग देम बैक एंड समटाइम्स दे से दैट इट्स देयर शेड्यूल समटाइम्स दे से कि यार ऑनलाइन से पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो अपनी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ये इंटरव्यू में आपको देख रहे हैं एंड दे आर ड्रॉइंग inspiration and motivation for you from you because you, sir, are truly an inspiration for me at least. So, yeah, what would you like to say to them? So I would just like to say a couple of things that for fitness there can't be any excuses, uh, because नहीं करने के 100 बहाने मिल जाएंगे, लेकिन करने का एक ही बहाना काफी है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैंने देखा है कि मेरे भी ऑफिस में लोग रहते हैं, वो मेरे को पूछते हैं कैसे करते हो, इतनी जल्दी 7 बजे ऑफिस आना होता है, कैसे मैनेज करते हो. मैं 7 बजे आना होता है ऑफिस, तो मैं 4:30 बजे उठूंगा, मैं 4 बजे उठ के करूंगा. मैं लोगों के से उठने के, मेरे घर वालों के उठने से पहले मैं मेरा रनिंग को फिनिश कर देता हूँ. तो अगर करना है तो करना है. एंड आगे इन दिस लाइफ अगर फिटनेस नहीं किया, देन आगे का लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो टाइप का फूड आ रहा है, जिस टाइप का हम खाना खा रहे हैं, देयर इज नथिंग इन दैट. अगर if you're not eating mindfully, not eating the right nutrition what you want, then you can never be fit. And then by
हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास पैसे देने से बेटर है कि यू गो इनटू अ फिटनेस regime where you motivate yourself, your family, your kids, because obviously your kids will follow what you do in front of them. Hmm. So if you want your kids to have a healthy lifestyle later on, then that will be a biggest gift to your next generation. Beautiful. What amazingly you summed it up. हम लोग ये बात करते हैं हमारी वीकली कॉल्स पे that the lack of fitness is only lack of fitness for a little while because after that it will transform into illness. And जब वो illness बन जाती है ना तो then there is no turning back. Prashant realizes this and खुलासा करने का टाइम आ गया. So if you are thinking, he's, just another working professional, he's a father of kids. He is a loving husband. Like I told you, so many things he's been doing, right? So Prashant, एक बार खुलासा कर देते हैं. How old do you think he is? जल्दी से एक बार comments में बताओ. और प्रशांत अब आप बता ही दो. What is your actual age? I've just completed 45. Now tell me कितने लोगों को लगा था that this is going to be a 45-year-old talking to us? It doesn't seem so at all. And you, sir, defy not only your age, but also with your mindset. I mean, you can beat many 16-year-olds as well. Because this is the kind of commitment is what, it takes to be where Prashant is right now. And that is all you need, trust me. Because बाकी सारे resources आपको मिल ही जाएंगे. So I guess we'll conclude this lovely testimonial interview. We've taken a lot of time from Prashant as well. So सबसे पहले तो Prashant, I would like to thank you दिल से for taking out your bona fide time from your busy schedule for doing this interview with me. And also I would like to wish you all the best for all your endeavors coming ahead, for your surgery ahead. And I pray and I really sincerely hope that you improve and maintain the results that you've achieved with us. And I'm sure हम लोग साथ रहेंगे आप करते रहोगे. You're always an ASF superstars. Well, I'd love to do that, and thank you so much for coming into my life at a very crucial stage, and you have been in the driving seat for me uh, to take me where I wanted. So thank you so much. The pleasure is all mine. So, guys, yeah, this is it. And I seriously hope you received some value out of this lovely interview and most importantly, got motivated to start your fitness journey with us. Not 6 months, later or 2 months later, but today itself. Because time is a scarce resource. You can make everything back. You can't make time back. So while you still have the time, you should work on your fitness so that you lead by example for yourself, for your longevity, and for your future generations as well. So, whatever your fitness goals, we here at Team ASF are here to help you achieve them in a quick, rightful, and sustainable manner. We're going to be soon back with another testimonial. Until then, I'm Coach Amitoj, the head coach and founder of Team ASF, and I have with me Mr. Prashant Gupta. Both of us signing off and saying Tata, bye bye, Thank you so sayonara. Bye, Prashant. Take much. care. Have Bye a good day. bye.